Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Exercise 10.2, question number 1. Recall that two circles are congruent if they have same radii. दो circles तभी congruent होते हैं जब उनके radius दोनों के same होते हैं. So prove that equal chords of congruent circles subtend equal angles at their center. अगर chords equal हैं तो center पर same angle subtend कर रहे हैं, हमें show कर. Let us see how. सबसे पहले हमें given है दो circles जो कि congruent हैं, तो उन दोनों circles में radii same है. तो इनमें अगर दो ट्राइंगल्स हम देखें, ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल PQR, इनको अगर हम कंसीडर करें तो वी हैव OB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू PR. ये चारों क्योंकि दो एंगल्स के दो सर्कल्स के रेडियाई हैं, सो फोर ऑफ दीज आर इक्वल टू ईच अदर, सो दे आर द रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मतलब सर्कल्स तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनके रेडियाई इक्वल होंगे. नाउ वी हैव AB इज इक्वल टू QR, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि chords equal है, so AB and QR chords they are equal. So we can say that triangle OAB is congruent to triangle PQR by SSS congruence rule. Now by this we can say that angle AOB is equal to angle QPR by CPC. So hence it is proved.